बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल एग्रीकल्चर। एनिमल एग्रीकल्चर बहुत तरह के होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, स्नेक्स, उसके बाद जानवर वगैरह आ जाते हैं। एनिमल एग्रीकल्चर has gone through the same industrialization as plant agriculture did in the 20th century. Today, 99% poultry, 98% peaches, 70% cows are raised in KFO, confined animal feeding operations. Confined adding finishing operation maximize animal production at a low cost but have several drawbacks. इसमें disease, pollution, ethics आ जाते हैं। Ethics आते हैं, animal are often stressed living in condition many consumers inhuman. Pollution आता है, cattle release methane, a greenhouse gas. Disease आता है, infection spread much more rapidly lead to dense animal population जिसमें antibiotic are freely administered to livestock to prevent many and promote disease and promote growth आ जाती है, जिसमें इवॉल्व रेजिस्टेंस होता है, एंटीबायोटिक बनते हैं, फिर एंटीबायोटिक बनते हैं। उसके बाद कैटल आता है जिसमें डेयरी और बीफ ऑपरेशन होते हैं। कैटल आर डोमेस्टिकेटेड फॉर्म और जो mammals that graze the grassland across Europe, Asia, and North Africa went extinct in 1627 due to overhunting diseases. Cattle are ruminant, meaning they have a large stomach compartment filled with bacteria that ferment plant matter into simple sugar. Beef cattle are breeds selected for size and growth rate. Beef cattle first undergo background for 6 to 8 months, यानी कि 2 teeth वाले जैसे आजकल के लोग कहते हैं. Where they are raised in a pasture to gain weight and build up their immune system before feeding to a feed a lot. उसके बाद आता है ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट BLM administer public pasture over land and arrange land for grazing. Rangeland आता है naturally occurring biomass that has suitable vegetation for grazing. Pasture land आ जाती है planted with ideal plant for grazing. Finishing आती है take place on feed loads and involve a calorie rich diet of corn. Manure आ जाते हैं is the urine and feces from cattle. Cattle evolved to eat grass, not corn, so they have many digestive roles. जिसमें एसिडोसिस आ जाते हैं, बैक्टीरिया, मीथेन पोल्यूशन आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं फूड पॉइजनिंग इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय एसिड रेजिस्टेंस बैक्टीरिया वगैरह वगैरह। डेयरी कैटल आ जाते हैं आर ब्रेड फॉर हाई मिल्क प्रोडक्शन like other mammals cow only produce milk after giving birth. Dairy cattle are bred at a year-old. They give birth after 9 months of gestation, then are regenerated, fragmented. After 2 to 3 months, cow produce milk for about 10 months out of a given year. Large farm will time breeding and milking. So production takes place 24/7 or after a long time. Earlier, उसके बाद आ जाते हैं पेस्चराइजेशन जिसमें पेस्चराइजेशन मिल्क को पेस्च्योर करने के लिए यानी कि मिल्क के बैक्टीरिया को किल करना है जिससे मिल्क की जो सी एक्सपायरी है वो थोड़ी बढ़ा सके। उसके बाद आ जाते हैं और beef, उसके बाद चिकन कहना है तो चिकन are domesticated red jungle fowl and omnivorous bird that feeds on insects, fruit and seeds. Laying hens जो उनसे देसी कुकड़ होते हैं are bred for a high egg production of about 250 per year। एक साल में 250 अंडे देते हैं।
Each bird has an area about the size of a sheet of paper to move in newly hatched chicks separated by gender, detected and declared to prevent injury for fighting. आगे आ जाते हैं ब्रॉलर hens, जिनसे हम लोग आम में खाते हैं, are bred for large body size and rapid growth. Full weight reach in 2 months. Their rapid growth lead to their health issues, weakened legs and joint heart failure, broken bones. फिर पिक्स आ जाते हैं, फिर आ जाती है लॉज एंड रेगुलेशन आ जाते हैं इसके, ये लॉज वगैरह हैं रेगुलेशन हैं, ये अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर आ जाते हैं, उसके बाद ये आगे इसकी फर्दर डिटेल दी हुई है।